Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today we are going to do our chapter 5, which is Introduction to Excel 2016. So let's learn about Microsoft Excel without wasting any further time. The name of our chapter is Introduction to MS Excel 2016, and the topics which we will study here are MS Excel, starting MS Excel, components of Excel window, creating a new workbook, different data types of Excel, entering data in a worksheet, editing data in a cell, moving around in a worksheet, saving a workbook, opening an existing workbook and closing a workbook. Now we have an activity which says browse the internet to find names of spreadsheet software and write the name of any two. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Microsoft Excel and Google Sheets. नाउ स्प्रेडशीट एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हम यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म. नाउ इन दिस चैप्टर हम लर्न करेंगे अबाउट एक्सेल व्हिच इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड इसको हम यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स. नाउ इट हैज मेनी बिल्ट इन टूल्स जैसे फॉर्मूलाज फंक्शंस जो हेल्प करते हैं हमारी टू मैनिपुलेट द डेटा क्विकली एंड इजीली. हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं ऑफ एक्सेल जैसे एक्सेल इंप्रूव करता है डेटा अपीयरेंस. डेटा कैन बी फिल्ड क्विकली इन रोज एंड कॉलम्स यूजिंग ऑटोफिल फीचर. Excel has built-in formulas and functions to do calculations. Data is automatically recalculated in the whole worksheet and if any change is made in a single cell. Now data को हम arrange कर सकते हैं in sorted order, that means in ascending order or alphabetically. नाउ स्टार्टिंग एमएस एक्सेल. उसके लिए हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे टिल द लेटर ई. देन वी विल सिलेक्ट एक्सेल 2016 फ्रॉम द लिस्ट. एक्सेल की जो स्टार्ट स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी एंड देन वी विल क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द start screen. So Excel application window will appear containing a grid of many cells. Now what are the different components of Excel window? We have quick access toolbar, title bar, ribbon, column headings, formula bar, status bar, file header, file tab, address bar, cell selector, row numbers and sheet tab. So what is cell selector? Cell which is currently selected. It will be highlighted by a rectangular box and its address will be shown in the address bar. Now हम activate कर सकते हैं cell को by clicking on it or by using our arrow buttons. To edit a cell हम double click करेंगे उस पे and use करेंगे F2 as well. कॉलम हेडिंग्स. कॉलम एक वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स होता है. सिंगल वर्कशीट कंटेन करता है 16384 टोटल कॉलम्स और एवरी कॉलम हैज इट्स ओन अल्फाबेट फॉर आइडेंटिटी फ्रॉम ए टू XFD and we can select a column clicking on its header. नाउ रो नंबर. रोज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स होती है. सिंगल वर्कशीट कंटेन करती है 1048576 टोटल रोज. Every row has its own number of identity starting from 1 to this. We can select a row by clicking on row number marked on the left side of the window. फिल हैंडल जो होता है ये एक स्मॉल डॉट प्रेजेंट होती है लोअर राइट कॉर्नर में ऑफ द एक्टिव सेल. ये हेल्प करती है हमारी टू फिल न्यूमेरिक वैल्यूज, text series, insert in ranges, insert serial numbers, etc. Next is address bar. ये show करता है हमें address of the active cell and if we have selected more than one cell then वो show करेगा हमें address of the first cell in the range. Next is formula bar. Formula bar एक input bar है below the ribbon. ये show करता है हमें content of the active cell and we can also use it to enter a formula in a cell. Next is title bar. Title bar will show the name of our workbook followed by the application name which is Microsoft Excel. Next is file tab. File tab एक simple menu होता है like other applications और ये contain करता है options जैसे save as, open, new, print, Excel options, share, etc. Then we have quick access toolbar जो हमें quick और easy access देता है उन options का जो हम frequently use करते हैं. हम यहाँ पे अपने favorite options को add on भी कर सकते हैं by adding new options to quick access toolbar. रिबन लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द टाइटल बार एंड ये कंटेन करता है कुछ टैब्स जैसे फाइल्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा एटसेट्रा. और हर टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जो कुछ टूल्स कमांड्स को कंसिस्ट करता है टू क्रिएट एडिट फॉर्मेट शीट्स इन एमएस एक्सेल. नेक्स्ट इज शीट टैब. ये जो टैब होता है ये हमें शो करता है करंट वर्कशीट विच इज प्रेजेंट इन द वर्कबुक
बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि वन शीट इन योर वर्कबुक विद द नेम शीट 1. Then we have status bar. ये एक thin bar होता है at the bottom of the Excel window. It will give you an instant help once you start working in Excel. Now creating a new workbook. New workbook बनाने के लिए फाइल जो होती है MS Excel में उसको हम workbook बोलते हैं. तो workbook consist करता है of one or more worksheets. हम उसको compare कर सकते हैं as a notebook. Now worksheets are like pages and workbooks are like notebook. तो टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, एक बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा, वहां से हम क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे इन द लेफ्ट पेन एंड न्यू पेन अपीयर्स ऑन द बैकस्टेज व्यू. देन वी विल क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी. नाउ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ एक्सेल, एनी टाइप ऑफ डेटा हम एंटर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर. टेबल शोन बिलो लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन एमएस एक्सेल. एंड तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डेटा टाइप आता है जनरल, एंड इसको हम यूज करते हैं टू स्टोर जब भी डेटा के पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता. देन वी हैव नंबर, यहाँ पे हम नंबर्स या फिर डिजिट्स को स्टोर करते हैं. करेंसी, यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं डेटा को इन टर्म्स ऑफ मनी. अकाउंटिंग, यहाँ पे डेटा नीड्स टू हैव करेंसी सिंबल या फिर कोई डेसिमल पॉइंट्स. डॉट डेट, यहाँ पे जो डेटा होता है वो स्टोर होता है इस तरीके के डेट फॉर्मेट पे. लॉन्ग डेट, तो व्हेन अ डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे, जनवरी, लाइक दिस. टाइम, व्हेन टाइम डेटा इज टू बी स्टोर्ड, जब भी हमें टाइम वाला डेटा स्टोर करना है. परसेंटेज इस वाले साइन के साथ ऐड करती है हमारे डेटा को. फ्रैक्शन जो है वो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एंटर कराते हैं. साइंटिफिक मतलब डेटा जो भी एंटर हो रहा है इट हैज लार्ज नंबर्स ऑफ डिजिट्स. देन वी हैव टेक्स्ट, तो जब भी कोई टेक्स्ट एंटर किया जाता है इन द सेल और नंबर, they are not to be included in calculations. Special, तो when text to be entered with special features जैसे pin code, telephone number and so on. Custom, तो when we want to enter data which do not fit in any of the above formats, तब हम different और unique special formats का यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट. सो टू एंटर डेटा इन एक्सेल हमें बस सेलेक्ट करना होता है अपने सेल को एंड बिगिन टाइपिंग. वील सी दैट जो टेक्स्ट है वो अपीयर होगा बोथ इन सेल एंड इन द फॉर्मूला बार अबव. टू टेल एक्सेल टू एक्सेप्ट द डेटा वी हैव टाइप्ड, हम प्रेस करेंगे एंटर की. नाउ द इंफॉर्मेशन विल बी एंटर्ड इमीडिएटली एंड द कर्सर विल मूव डाउन वन सेल. जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट था VisiCalc was developed in 1978. नेक्स्ट इज मूविंग अराउंड इन अ सेल. तो एज यू नो जो साइज होता है हमारी वर्कशीट का इट इज वेरी लार्ज. तो टू मूव अराउंड इन सच लार्ज शीट हम यूज कर सकते हैं फॉलोइंग कीज. जैसे फर्स्ट होती है अप एरो, ये हमारे को अप साइड अपवर्ड्स मूव कराने में हेल्प करती है. डाउन एरो की या फिर एंटर मूव वन रो डाउनवर्ड. लेफ्ट एरो और शिफ्ट प्लस टैब की जो होती है ये मूव करती है वन कॉलम लेफ्ट. राइट एरो और टैब की मूव वन कॉलम राइट. We have page up which is move up by one screen. Page down, move down by one screen. Home, move to first column of the row. Control plus down arrow move कराता है to the last row. Control plus up arrow move कराता है to the first row. Control plus left arrow जो है it moves to the first column. Control plus right arrow moves to the last column. Control plus home move to cell A1. Control plus end move to the column cell of the last used row and column. Next is saving a workbook. So whenever we enter data in different worksheets of workbook, तो हमारी जो worksheets होती हैं workbook की वो saved होती है together in that workbook only. तो save करने के लिए हम file tab पे जाएंगे, save as option पे click करेंगे from the left pane of the backstage view, then select करेंगे desired location from the right pane of the screen, या फिर हम select कर सकते हैं browse option को from the middle pane of the screen एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. वहां से हम एक लोकेशन चूज कर सकते हैं अपनी फाइल के लिए एंड एक डिजायर्ड नेम देंगे इन द फाइल नेम बॉक्स. देन वी विल क्लिक ऑन सेव बटन, या फिर हम कंट्रोल प्लस एस को भी प्रेस कर सकते हैं टू सेव दैट फाइल विद .xlsx एक्सटेंशन. शॉर्टकट की प्रेस F12 टू ओपन सेव एज डायलॉग. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, यानी कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग सेव्ड वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए स्टेप्स है जैसे क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन. एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहां से आप ब्राउज ऑप्शन चूज करोगे टू नेविगेट द डिजायर्ड फोल्डर. सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन एंड क्लिक ऑन ओपन बटन और आप देखोगे कि आपकी सिलेक्टेड फाइल ओपन हो जाएगी. क्लोजिंग अ वर्कबुक, दैट मीन्स टू क्लोज द करंटली ओपन वर्कबुक. आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे, एक न्यू मेन्यू अपीयर होगा, देन क्लिक क्लोज ऑप्शन, ओनली जो करंट वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी.
या फिर आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो क्रॉस बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट बिलो द टाइटल बार. Let's revise the chapter. Microsoft Excel is a spreadsheet program which helps us to enter large amount of data in the form of tables, that is in rows and columns. File in MS Excel is called a workbook. Middle grid-like area is called worksheet. Data on a worksheet is stored in cells and there are different parts of an Excel worksheet. Let's do the exercise. First is the correct option. The name of the workbook is displayed on the title bar. Default extension of an Excel is .xlsx. And which key moves the cursor one row up arrow? Which of the following is a popular spreadsheet program? Excel. Let's do fill in the blanks. Dash tab shows all the worksheets which are present in the workbook. So that is worksheet tab. Dash shows the address of an active cell, address bar. Dash is a small dot present on the lower right corner of the active cell, fill handle. Dash shows the content of the cell, formula bar. Working area in MS Excel is called. Now, next is true false. Ribbon is used to issue commands. True. File tab is present just below the quick access toolbar. True. Rows are identified by the alphabet. False. Control plus N moves the cell pointer to the last used cell. True. There are 4 sheets by default in Excel workbook. False. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Then take care.